What happened? Done this? Chalo. Now we will look at Australia. We saw Australia, right? What we saw in Australia yesterday? Territories. है ना? How Australia is divided? What are the important divisions in Australia you will look at? This is the region of Western Australia. This is Northern Territory. This is South Australia, Queensland, New South Wales and Victoria. These are the major regions in the Australia. How we draw? चलो let's draw Australia once. ठीक है? What is located here? This. Which islands are these? New Zealand. Here what it is? New Guinea. No. Papua New Guinea. है ना? New Guinea is in the here Africa. Guinea, not Guinea. मैप में देखा था ना? ठीक है? Nine cities you remember? What were the cities we studied about them? Important cities of Australia. फिर से लिखो मैं, याद है? याद है ना? एक बार देखिए मैप में देखे. You dictate, you tell what are the cities, important cities of Australia. B से स्टार्ट किया था. BSC. Where is Brisbane? Which? Queensland. This is Brisbane. Then S से Sydney. C से कैनबेरा, then मेलबर्न, then A से एडिलेड. Getting where they are located map में? Can you see started here? Brisbane, Sydney, Canberra, Melbourne, Adelaide, then Perth. PhD we did Perth. Then what was the next? Darwin. Darwin is in the north. Hobart. Hobart यहाँ पे तस्मानिया में. Getting the location, सारी 9 cities we did about Australia and their locations. चलो, व्हाट वी डू ऑलवेज फर्स्ट कैसे स्टार्ट करते हैं हम? ठीक है, हाउ वी स्टार्ट. वाटर बॉडीज देखते हैं. कॉन्टिनेंट, तो छोटे से ऑस्ट्रेलिया के आसपास वी विल स्टार्ट विद व्हाट आर द वाटर बॉडीज लोकेटेड. ओके, ओपन है ऑस्ट्रेलिया मैप. ओपन. चलो, फ्रॉम टॉप से वी स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ साइड. देयर इज अ गल्फ ऑफ कार्पेंथेरिया. दिस इज द नंबर 1. इन द डिप्रेशन there is a gulf of Carpentaria. ठीक है. Second one nearby there is a Arafura Sea. Second, getting Arafura Sea. ठीक है. Third one Timor Sea. Timor or Timor, you can say anything. ठीक है. Next, what to do? Which ocean here? Important ocean. In which ocean this is? This is Indian Ocean. So fourth water body, Indian Ocean. Now you will come south. Now come to south. There is a Great Australian Bight. Great Australian Bight. South, make them south of Australia. There is a Great Australian Bight. If you look here. There is a Tasmania and Australia. In between there is a strait, Bass Strait. Okay, Bass Strait. Getting the strait between Australia and Tasmania is the Bass Strait. Then near to that there is a Tasman Sea. This is the 7th one. Tasman Sea is the 7th one. Then to the east of Australia, which ocean? No, come Pacific Ocean. ठीक है. This is the 8th water body is Pacific Ocean. Getting?
हाँ सदर्न ओशन तो है, वो तो 60 डिग्री के नीचे है ना, काफी दूर है इससे। चलो आप उसको एडिशनल एक और मान लेना, ठीक है। सदर्न ओशन तो फिर हर कॉन्टिनेंट के नीचे है, हर कॉन्टिनेंट के नीचे लिख लो, फिर आप एक ऐड कर लो। गेटिंग? सदर्न ओशन तो हर, हम मेजरली क्या देखते हैं, व्हाट वी सी नियर सराउंडिंग दिस कॉन्टिनेंट, व्हाट आर द वाटर बॉडीज। देन नेक्स्ट व्हाट इट विल बी, कोरल सी, 9th वन, कोरल सी। गेटिंग? एक और स्ट्रेट है ऊपर, यहाँ पे है, देयर इज अ टॉरस स्ट्रेट, दैट इज द 10th वन। गेटिंग? टॉरस स्ट्रेट ऊपर, Papua New Guinea, between Australia and Papua New Guinea, there is a Torres Strait. Getting all the water bodies? So we will mark it in our map also. This is the first one, is the Gulf of Carpathia. चलो देख के बताओ यहाँ पे पहला कौन सा है? This second one is? Third one, where is third one? Timor Sea. Third one is a Timor Sea. Fourth one is Indian Ocean. Fifth one, it is located here, यहाँ पे fifth one. Sixth one was Strait is Bass Strait. ठीक है, so this is the sixth one. Seventh one is Tasman Sea is here. Eighth one Pacific Ocean. Ninth one Coral Sea. 10th one Torres Strait. याद हो गया? क्लियर? इजी है। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको सिर्फ 10 वाटर बॉडीज ही इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, 1 to 10 इन एंटी साइक्लोनिक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अपने नोट्स में भी आप सीक्वेंस में लिख लेना 1 to 10 व्हाट आर द वाटर बॉडीज सराउंडिंग दी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलो इफ नाउ रिटर्न सबको क्लियर? Now if you look at the map of Australia, अच्छा this was the Great Barrier Reef also, पता है ना कहाँ पे लोकेटेड है ये? This portion here near the Queensland Reef के बाद। पहले हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को how it is divided, what are the major divisions you can see here physiographic. You can see this is very hilly highland region, there is a central greenery is there, central lowland, and again eastern side we have a great dividing range. Here is a chain of, this is a mountain range that is running through the eastern coast of the Australia. What you will see here, it is a desert sandy region. Most of the population of the Australia is concentrated in the eastern part. यहाँ का capital भी इधर ही है। ये जो red line है, this is the coastal strip of Australia, and this region is highly populated and industrialized region, or you can say developed part of the Australia. Very scarce population is on the वेस्टर्न पार्ट, है ना। मैप से क्लियर होता है ना कहाँ पे ग्रीनरी है, कहाँ पे डेजर्ट है। तो जिस तरीके से ज्योग्राफी होती है, अकॉर्डिंग टू दैट पीपल ऑल्सो लिव वेर एवर देयर इज अ फेवरेबल कंडीशंस। सो यू कैन डिवाइड ऑस्ट्रेलिया इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 रीजन्स, फर्स्ट वेस्टर्न प्लेट्यू, सेकेंड सेंट्रल लोलैंड, थर्ड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके, and then fourth part there is another feature which is very important for Australia, this is the Great Barrier Reef। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये ग्रेट बैरियर रीफ। कोरल रीफ्स नहीं समझ में आए थे? चलो मैं अब वीडियो दिखाती हूँ कोरल रीफ्स होते क्या हैं। लिख लिया? ये लिख लिया? पहले ये चारों नाम आप लिख लो। ठीक है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यू कैन राइट दिस। Here this part you can write Eastern Highlands. In Eastern Highland we have this Great Dividing Range. Written? Okay.
Written coral reef. This is the largest coral reef in the world. The Australia, the coral reef is the largest coral reef in the world, and coral reefs are formed because of the tiny polyps. आप ये याद रखना कि this is the largest coral reef in the world. ग्रेट बैरियर रीफ तो पता है. ज्यादा ही अंधेरा हो रहा है. ठीक है, बहुत ज्यादा अंधेरा लग रहा है. Tropical ocean waters around the globe. Beyond their brilliant coral reefs, their bright, vivid colors can be seen in tropical ocean waters around the globe. Beyond their brilliant appearance lies a hidden significance. Coral are animals. Though they may look like colorful plants, coral are in fact made up of tiny animals called polyps. These invertebrates can range from the size of a pinhead to a bit larger than a basketball. Each polyp consists of a soft, sac-like body topped by a mouth covered in stinging tentacles. To protect their soft bodies and add support, the polyps secrete limestone skeletons, or calicles. Corals are megabuilders. Polyp calicles connect to one another, creating a colony that acts as a single organism. As colonies grow over hundreds and thousands of years, they join with other colonies and become reefs that can grow to hundreds of miles long. The largest coral reef is Australia's Great Barrier Reef, which began growing about 20,000 years ago. Coral reefs are some of the most diverse ecosystems on Earth. Though they cover less than 1% of the ocean floor, coral reefs are home to 25% of all marine creatures. It's been estimated that up to 2 million species inhabit coral reefs, rivaling the biodiversity of the rainforest. The reefs provide rich habitat that helps protect young fish as they grow. Coral are translucent. Coral reefs get their rainbow colors from algae or zooxanthellae that live in their tissue. Though corals use their tentacles to capture some food, most of their food comes from the algae they house. When coral becomes stressed by pollution or other factors, they evict their algae. Coral bleaching results, revealing corals' white skeletons. Coral provide a window to the past. As coral grow, their limestone skeletons form layers similar to tree rings that vary in composition and thickness based on ocean conditions at the time. With some coral reefs growing for thousands or even millions of years, scientists can study these layers to reveal what the Earth's climate may have been like in the ancient past. Unfortunately, climate change is putting corals' future in danger, along with the millions of species that inhabit the reefs and the 500 million people that rely on reef fish for food. Warming waters result in prolonged coral bleaching that kill coral reefs or leave them vulnerable to other threats. Without significant action on climate change, our oceans could lose many of their colorful reefs by the end of the century. So, understood? What were the coral reefs? What is coral bleaching? Got clear? You got to know what you saw. Tell
2-3 lines about coral reefs. What you saw in the video? And it works like coral. It works like How coral is important for us. Like, polyps. Huh? important for Important for biodiversity, right? so important for aquatic. Aquatic. It is a home for many aquatic life. What are corals actually? They are animals. ठीक है? Polyps होते हैं छोटे छोटे. Getting what was the structure? It was like this. छोटे छोटे. They were forming a sac-like structures. They were animals. They live in symbiotic relationship with which algae? A name was mentioned, right? What relationship? Symbiotic relationship with the zooxanthellae algae is there. ठीक है? This algae gives color to this corals. Okay? When what is bleaching due to global warming, what happens? The corals they don't allow this zooxanthellae algae to survive on them. ठीक है? They do not live in harmony. Then what happens? The corals get discolored. Algae don't survive in the warm water, so the corals become discolored. So that is called coral bleaching. The color of the corals fades away. So this is a climatic effect that could be easily seen in the sensitive organisms. Okay, so this is a very important and UPSC favorite also. Sometimes they have asked also about corals and all things. Okay, you can relate in every answer whenever a question will be asked. Key ecological environment or climate change. What is the impact you can see? So you can add this point there also. No, one line if you write corals are getting impacted or coral bleaching is happening. So this is how you can use this material. Getting how you will use it is just not for viewing and forgetting. Getting what is the purpose of showing you this video? Taki you can use the material in your answers or it will help in your tackling the questions of prelims also. Okay? Chalo, we were doing Australia. So this was the part of western part, desert and plateau region, central lowland and eastern highland. So first of all we will look at this part, western part. What is the western part? It is a mostly desert part of the what is there? Deserts are there. So many deserts are there in Australia. Western highland is there, right? So first desert, right? Deserts of Australia. First one is Great Sandy Desert. हाँ, zooxanthellae. Zooxanthellae algae. And what is the relationship? That is symbiotic relationship. First desert is what is that? Great Sandy Desert. ये रहा पहला है यहाँ पे great. This whole portion is desert and dry area. In that there are some famous deserts that you have to remember. First one is Great Sandy Desert. This great is there. Then next is the Gibson. Below that there is a Gibson Desert. दो सिस्टर्स हैं गिब्सम और सिम्सम के राइट में देखो देयर आर टू सिस्टर्स टू ग्रेट डेजर्ट एंड टू सिस्टर डेजर्ट वन देयर इज अ गिब्सम अनदर वन इज सिम्सम देयर इज अ ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इजी टू रिमेंबर फर्स्ट वन ग्रेट सैंडी डेजर्ट with respect to that there is a great Victoria desert, there is a Gibson and Simpson desert, and the fifth one is the Tanami desert. So 5 desert you will have to remember with respect to Australia. This is Tanami. इधर देखो नॉर्थ वाले नॉर्थ टेरिटरी में मिल गया. There is also one Little Sandy also. Sometimes they ask, is there Little Sandy desert? Is it given? ग्रेट सैंडी लिटिल तो रहने दो अगर नहीं दे रखा तो लिटिल सैंडी हियर इट इज गिब्सम डेजर्ट गिब्सम ग्रेट सैंडी ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट सिम्सम तनामी नहीं उसमें मेंशन नहीं ओके देयर इज आल्सो वन नेम यू राइट लिटिल सैंडी डेजर्ट
So all the deserts are clear. Major 5 deserts of Australia. Remember? Speak. You tell. Start. 1. Great Sand, Great Sandy and next Gibson, Gibson, Simpson, Simpson, and Great Victoria, Great Victoria and and Tasmania. Tanami deserts. Okay, so 5 simple. Australia is small continent, easy continent. Okay, so next we will study about peninsulas. What are the important peninsulas in Australia? Heading you write peninsulas of Australia. Is it mentioning? Okay. First one is Cape York. Cape York. This you will look here. Cape York Peninsula. Second one is very important, Arnhem. Arnhem. Near the Gulf of Carpentria. Arnhem. ठीक है? So these are the 2 important peninsulas of Australia. Only 2. Get it? Here you have Cape York and the second one is this one. This is the first one. Written? Australia is not having very much rivers, but there is one river which is draining from this great. ये तो मार्क कर लिया, ये तो बताने की जरूरत नहीं ना. Great dividing range is there in the eastern part, ये तो पता होगा, ठीक है? This is there. Here is a Murray River Basin, Murray Darling River Basin. This Murray River Basin. This is a very important river basin of Australia. Because of this central lowland is green, and other reason is also there. First you mark this Murray River Basin, Murray and Darling Rivers. दोनों दिख रहे हैं? And they fall into the Encounter Bay. The mouth of that is called Encounter Bay. When they will fall into this in the Pacific Ocean, in South Ocean. So that point is called Encounter Bay. Is it visible in your map? Encounter Bay. So you write down at the mouth of this river. There is a Darling River and Murray River. Can you find 2 rivers? Yes. The mouth of that river is Encounter Bay. This Encounter, E-N. Encounter Bay. You mention it at the mouth of this Murray Darling. एनकाउंटर पे ये जो आ रहा है ना माउथ पे, यहाँ पे आप लिख लो ना, इसके पास एडिलेड के पास आप लिख लो एनकाउंटर बे. Marked? Now there is one special feature with respect to this Great Artesian Basin. ये जो एरिया है, this you can see it's so much greenery is there. What is this Artesian Basin? This is a special feature of Australian lowland. These are underground pressurized walls. What happens? These are, इसमें क्या है, wells हैं, इसमें अपने आप से पानी बाहर आता है on the surface. Suppose this is the surface of the earth. ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड. ठीक है, समवेयर इन द पॉकेट्स इट इज कलेक्टेड. लुक हियर व्हाट इज हैपनिंग. आर्टिजन सुना है? आर्टिजन जिसमें कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती पानी को बाहर निकालने की जरूरत के लिए. व्हाट हैपेंस? बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑटोमेटिकली दिस वाटर कम्स आउट. देयर इज नो मोटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, नथिंग इज रिक्वायर्ड. दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड आर्टिजन वेल्स कहलाते हैं. हमारे गांव में था आर्टिजन वेल ऐसा, उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं चाहिए होता, अपने आप कंटिन्यू वाटर कम्स आउट 24/7. देयर इज नो मैकेनिज्म टू स्टॉप आल्सो. एक बार ही आर्टिजन नॉर्मल वेल तो हम लोग खुद खोदते हैं ना, अंदर जाके खोदते हैं.
इसमें भी हम थोड़ा सा खुदाई करते हैं, पर इसमें क्या है, अंडरग्राउंड पानी इतना ज्यादा होता है, इतने प्रेशर कि अपने आप वो बाहर आने की कोशिश करता है। तो इसमें बहुत सारे वेल्स हैं, देयर आर मेनी वेल्स इन दिस रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। Here you don't need to drain so much, हम 100 फीट 200 फीट अंदर ड्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दिस इज रिच विद वाटर, क्योंकि आप देख रहे हो चारों तरफ से पानी सराउंडेड है ना। दिस कॉन्टिनेंट के दिस इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, है ना। सो वाटर गेट सीप्स इनटू द अर्थ, सो एंड दैट बिकॉज ऑफ द प्रेशर, अंडरग्राउंड प्रेशर, इट कम्स आउट, ठीक है, ऑटोमेटिकली। नो मोटर, नो इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट वाटर ऑन द surface, so they are called artesian wells, ठीक है। these are मतलब underground, you can write one line, underground pressurized wells with respect to artesian wells, what are they? Underground pressurized wells, wells from which water comes out automatically to the surface, ठीक है। दिस इज अ स्पेशल फीचर अबाउट द सेंट्रल लोलैंड। नहीं, इंडिया में भी कहीं कहीं है, मतलब मेन फीचर जैसे हाईलाइट है ना, इट इज कहीं और मैप में आपने देखा ऐसे मेंशन्ड है, आर्टिजन बेसिन नहीं मेंशन है ना, बिकॉज इट इज ह्यूज इन नंबर, मेनी बेसिन्स आर देयर, मेनी वेल्स आर देयर इन इंडिया में भी हैं, जैसे मैं बता रही हूँ, इट इज देयर इन नॉर्दर्न इंडिया आल्सो समवेयर। हाँ, फ्रेश वाटर सोर्स, क्योंकि इट इज कमिंग फ्रॉम अंडर वाटर ना, इट इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। अंडरग्राउंड में जब पानी सीप करता है तो धीरे धीरे व्हाट हैपेंस इज गेट फिल्टर्ड एंड प्योर, एंड इफ दैट अंडर वाटर, हम जब समरसीबल चलाते हैं तो प्योर वाटर ही आता है ना, उसी तरीके से आप ये मानो कि साफ पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज नेचुरली दिस पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया रिसीविंग फ्रेश वाटर, ठीक है। एंड इसी वजह से सो मच ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड एवरीथिंग हैपेंस, एंड कैटल फार्मिंग इज ऑल्सो देयर, ठीक है। लार्ज स्केल पे क्या है, अच्छी अच्छी ब्रीड है काउज और फेलोज वगैरह की, लार्ज स्केल इंटेंसिव फार्मिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। सो दिस वी हैव डन विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया, व्हाट एल्स वी डू? रिवर्स तो वी हैव डन, ठीक है। रिवर वन ओनली रिवर इंपॉर्टेंट, ठीक है, ज्यादा रिवर्स इसमें है नहीं इंपॉर्टेंट, एक मुरली डार्लिंग रिवर बेसिन है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, लेक्स भी यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत छोटे छोटे हैं, दे रेयरली कम इनटू एग्जाम, ठीक है। क्या माउंटेन, तो ये मैंने बताया, माउंटेन पीक रहते हैं। हाँ, एक यहाँ पे ग्रेट माउंटेन रेंज में आप देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पीक है, माउंट कोशियास्को in Australian, that great dividing range. इसमें नहीं है, अभी इस मैप में विजिबल हो रहा है, आप उसमें देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में नियर दी मुरली डार्लिंग रिवर सिस्टम, देयर यू विल फाइंड, कैनबरा के पास है ना, गेटिंग, दिस इज द ओनली हाईएस्ट पीक, है ना। एक पीक यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, कोशियास्को, यही तो है, यही तो बताया ना, KOSCIUSKO, ठीक है, Z होगा, Z है यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट, मिल गया। So this is the important river that you have to remember, मतलब peak. Let's look at the New Zealand also. New Zealand के respect में हम देख लेते हैं what are the important things you have to remember. First, let's do the metal of. Again, you draw one map of Australia. We will do the metal resources of Australia here only. Okay? इसी में मैं आपको मार्क कराती हूँ, बताती हूँ कैसे क्या करना है. ठीक है? Heading you write metal resources of Australia and draw one map of Australia. Okay? Drawn? Draw one map.
There are two basins. Here there is one river, right? And here is also one river. Two rivers are there. कौन से rivers है यहाँ पे बताओ? River नहीं, oceans, seas. Which sea we mentioned here just now? Arafura Sea. And in the down, what was there? Which sea? Tasman Sea. So this is a high reserve for the oil and petroleum, offshore petroleum. यहाँ पे भी you can write petroleum and oil. ठीक. Then this is the region of iron. तो light हो गया. This you will find iron. Here you will find aluminium and also uranium. This region. Resource wise, this continent is very rich. This peninsula, here you have marked. This peninsula is also famous for aluminium, or you can say bauxite. और aluminium कहाँ से आता है? Bauxite की ओर से aluminium आता है. From bauxite we get aluminium. So this is the region of aluminium and bauxite. ठीक है? यहाँ here is one region, name of you can write. हाँ, गोल्ड आएगा भी, नीचे आएगा गोल्ड. पिलबारा जगह का नाम है. यहाँ पे ये लोकेशन है, कभी कभी स्पेसिफिक नाम है. हेमर्सले. दिस इज HAMMESLEY. ठीक है. दो नेम्स आप याद रखना विद रिस्पेक्ट टू दिस रीजन. इट इज नॉट गिवन इन द मैप आई गेस. तो ये दो नाम क्या है? आयरन रिसोर्स रिच है. ठीक है. हैमर्सलाई, SLEY, हैमर्सले. पिलबारा एंड हैमर्सले. ठीक. ओके, दिस then here you will find, here is a one plateau or mountain, you will find Mount Isa. Here you write, you can draw like this, or you can Mount Isa. It is not given, then you write it down. नहीं दिया होगा. This region is of Mount Isa. This is a highland. Okay, it is famous for silver is Ag, right? Silver होता है ना Ag का, and zinc. So this region, this small region is famous for copper, lead, zinc and silver. Ag is synonym for, किसके लिए साइंटिफिक नेम है? Ag is silver, right? ठीक है. सेम यहीं पे साउथ में आप जो मुरे डार्लिंग का जो रिवर बेसिन है, देयर इज अ माउंट ब्रोकन. This region, Broken Hill, Mount Broken, or you can write Broken Hill. This. This is also famous for lead, Pb, Ag, zinc. Above Australian Bight, there is a resource of uranium. This part, Australian Bight is there. उसके ऊपर वाला जो रीजन है, that is famous for uranium. This southern part of the Australia. Then this part you have, this here you have KBC.
This is important for gold. This. ठीक है? Can you find name in your atlas? Kulgarli? Double O. It is double O. Boulder, हाँ. And Kalgarli. Getting? Getting this location? Mila? Can you see these three locations? Getting? Kulgarli, Boulder and Kalgarli. This is famous for gold reserves. गोल्ड प्रोडक्शन. कहाँ पे? हाँ, मतलब साथ में यहीं पे होगा. देखो आप लोग. ठीक है. हाँ, साथ में रिजर्व याद रखना गोल्ड के लिए. ठीक है. सो व्हाट आर द रिसोर्सेज वी आर सीइंग हियर? पेट्रोलियम एंड ऑयल है, गोल्ड वी हैव, आयरन इज देयर, कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर. हियर इट इज एल्यूमिनियम बॉक्साइड. ठीक है. पेट्रोलियम रिजर्व्स है. ठीक है. सारे मार्क कर लिए. गेटिंग. तो मैं अब इसको अपने नोट्स में भी बनाओ. ड्रॉ इट इन योर नोट्स ऑल्सो. सिर्फ मार्क नहीं करना, ड्रॉ इट इन योर नोट्स. जैसे मैंने नोट्स में बनाया है, यू शुड मार्क इट इन योर नोट्स. ओके. यस, गुड. क्योंकि इन एग्जाम यू हैव टू मार्क इट इन द नोट्स, राइट? Yes, one I mentioned here and one here. हाँ, limited, scarce resource, not very easily found. ठीक है. So but it is having, I told you ना, this is a rich metal resource rich country. Yeah, it can be largest, but I don't think it is the largest uranium reserve in Australia. Na? You will have to find out. You search, you find out, is it the largest uranium reserve? Because I'm not clear, because these two are your largest or not. Okay, because the other countries are also having uranium reserves. Okay, chalo, this is clear. All have marked. You are marked. चलो, let's study a little bit about New Zealand. What is New Zealand? थोड़ा सा पढ़ना उसके बारे में, ज्यादा नहीं. ठीक है. Nearby island nation. Correct. Which is there is one top island, right? And there is a one